Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I'm going to start our new chapter, that is enzymes. So let's move to the light board. So dear students, chapter number 3, that is enzymes. So hopefully आप इस word से familiar हैं. ग्रेड 9 में भी आपने इसके फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़े थे. सो आज हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स को, और इससे रेलेवेंट जितनी भी जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. बहुत अहम ये टॉपिक है रिगार्डिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चैप्टर बहुत अहम है. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और दे हैव टू पास द मेडिकल एंट्री टेस्ट और एमटी कैट, तो एमटी कैट के अंदर ये एंजाइम्स वाला टॉपिक मौजूद है, ये शामिल है. सो लेट्स स्टार्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टर्म पढ़ते हैं, दैट इज कैटालिस्ट. सो मोस्ट ऑफ देम यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म कैटालिस्ट. केमिस्ट्री में आपने मुख्तलिफ जगह के ऊपर पढ़ा होगा इसका नाम कैटालिस्ट. सो कैटालिस्ट, a substance that increases the rate of a chemical reaction without being used itself. For example, nickel or platinum or palladium, etc. So dear students, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करे उसे हम कहते हैं कैटालिस्ट. और ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज तो करवा देता है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो करवाता है, लेकिन खुद उसमें कंज्यूम नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता, इन द सेंस कि इसकी किसी भी तरह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शामिल नहीं होती आगे केमिकल रिएक्शन के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर. जैसे कि निकल, प्लाटिनम, प्लेटियम, या आपने डिफरेंट तरह के कैटालिस्ट जो हैं ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे. सो वी आर हियर कंसर्न्ड अबाउट द बायोलॉजी. सो हियर इज अनदर टर्म, दैट इज बायोकैटालिस्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, बायोकैटालिस्ट आर सब्सटेंस that increases the rate of a chemical reaction in living organisms. In living organisms or cells or systems, the living systems, is called a biocatalyst. So hopefully आपको ये टर्म समझ आ गई कि अगर वही कैटालिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते तो उस कैटालिस्ट को हम कहेंगे बायोकैटालिस्ट. सो बायो मीन्स लाइफ और लिविंग, और द सेल्स और द लिविंग सिस्टम्स. अब यहीं से हम डिराइव करेंगे अपनी डेफिनेशन, दैट इज एंजाइम. So dear students, enzymes, the most important group of
substances that are protein in nature which act as biocatalyst. So dear students, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें सबसे अहम ग्रुप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स इज द एंजाइम्स which are by nature they are protein and they act as biocatalyst. Means enzymes ऐसे proteinaceous materials होते हैं जो living organisms के अंदर rate of chemical reaction को increase करते हैं. They tremendously increase the rate of a biochemical reaction. A millions of times faster than a reaction which is not catalyzed by any catalyst. तो ऐसे ये components हैं, ये ऐसे proteinaceous molecules होते हैं जो आम तौर पर बनाए जाते हैं इन द लिविंग सेल्स. लिविंग सेल्स मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कंपोनेंट्स बनते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये कंपाउंड्स बनते हैं जिनकी मोस्ट ऑफ द नेचर जो होती है वो प्रोटीन होती है. और इनका काम क्या होता है? दे ट्रिमेंडसली इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन नॉन कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन. क्लियर? अगर डियर स्टूडेंट्स एंजाइम्स खुदा ना खास्ता ना होते तो हमने जो एक निवाला जो खाया है उसको डाइजेस्ट करने में शायद इतना वक्त लग जाता कि हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करना इस दुनिया के अंदर मुश्किल हो जाता. सो दे ट्रिमेंडसली इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर. वो जो हम खाते हैं उन फूड सब्सटेंसेस को ये डिजायर्ड हमारे जो डाइजेस्टेबल और डिफ्यूजेबल पार्टिकल्स हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफाइन करते हैं दैट एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपने याद रखना है. प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो क्लासिफिकेशन पढ़ाई गई थी आपको प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन, जिसमें दो तरह की आपने प्रोटीन्स पढ़ी थी, द टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, द फाइब्रस प्रोटीन्स एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और वहां पर आपने एग्जाम्पल में एंजाइम्स का नाम पढ़ा था. सो दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैविंग three-dimensional structure made up of hundreds of amino acids. Hundreds of amino acids, my dear students. Dear students, these amino acids are joined with each other. तो डियर स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड था? आपने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल से पढ़ा. विद ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड फोल्डेड टू मेक a globular structure or conformation. So dear students, enzymes hundreds of amino acids से मिलकर बनते हैं और amino acids आपस में पेप्टाइड लिंकेजेस और पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए
जुड़े हुए होते हैं, केमिकली लिंक्ड होते हैं, और एंजाइम्स के अंदर ये इस तरह से लिंक होते हैं, इस तरह से फोल्ड बैक होते हैं कि ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अटेन कर जाते हैं, या 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन जो है उसको अटेन कर लेते हैं। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और टर्म को मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा, दैट इज सबस्ट्रेट। सो सबस्ट्रेट, any substance at which an enzyme acts is called a substrate. For example, carbohydrates or proteins or lipids, etc. So dear students, एंजाइम्स जिस सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करेंगे, जिसके ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्लियर? द सब्सटेंस एट विच एन एंजाइम एक्ट्स इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो प्रोटीन्स हो सकती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, वो लिपिड्स हो सकते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं। सो एनी सब्सटेंस एट विच द एंजाइम एक्ट्स। Clear, dear students? Now let's move to another important concept, that is active site. So dear students, that is a small charge bearing site at which the substrate binds and catalysis takes place is called an active site. तो डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स 100 ऑफ एमाइनो एसिड से मिलकर बने, लेकिन एंजाइम्स के ऊपर एक बहुत छोटा सा चार्ज बेरिंग रीजन होता है, एक चार्ज बेरिंग साइट होती है। वो जगह जहां पर आकर सबस्ट्रेट ने अटैच होना है उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। और डियर स्टूडेंट्स, जो एक्टिव साइट है, इट इज फर्दर divided into 2 main regions. So I'm going to draw an enzyme. So let's suppose this is an enzyme. तो आप सोच रहे होंगे इसको मैंने स्फेरिकल या ऐसे ग्लोबुलर शेप क्यों बनाया? बिकॉज कि हमने पढ़ा दैट द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, ऐसे स्फेरिकल इन शेप, ग्लोबुलर इन शेप। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, याद रखना, ये दीज आर द फंक्शनल प्रोटीन्स। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स थी उनमें कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट्स? आपको याद होगा, द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैम। इन चैप्टर नंबर 2 वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। सो दिस इज an enzyme and this one जो मैंने अभी ग्रीन में मार्क किया, this is the active site। ये इसकी एक्टिव साइट है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्टिव साइट है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेन रीजन्स। इसके 2 मेन साइट्स होती हैं या रीजन्स होते हैं। ये जो सी आपको डिप्रेशन वाली साइट नजर आ रही है, जिसको मैं पिंक कलर से मार्क कर रहा हूं, दिस वन पिंक कलर। सो दिस साइट, this one, the pink colored site, this is called as
the binding site, ये बाइंडिंग साइट कहलाती है। और यहां पर जो मैं यहां से ब्लू कलर से मेंशन कर रहा हूं, ये वाली दिस वन जो इनके ऊपर की तरफ मौजूद है, दिस इज कॉल्ड एज द कैटालिटिक site. So these are the two regions which are present along the length of the active site. So what is binding site, dear students? So the binding site, it is the region of active site which recognizes the substrate and allows binding or attachment. तो जैसे ही जो सबस्ट्रेट की जो शेप होती है, जो कि ऑलमोस्ट इसके स्पेसिफिक होती है, उसको पहचानेगा, उसको रिकग्नाइज करेगी ये बाइंडिंग साइट, और उसको अलाउ करेगी कि वहां पर आकर अटैच हो सके। तो जैसे ही सबस्ट्रेट यहां पर बाइंडिंग साइट के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सो इट मेक्स द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ES कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर जैसे ही आकर जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा ऑन द बाइंडिंग साइट, इट मेक्स अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये पहला स्टेप है इन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आगे चलकर आपको डिटेल से समझाऊंगा भी। तो उसके बाद फिर जो कैटालिटिक साइट है, इट प्रोसीड्स द कैटालाइसिस ऑफ द रिएक्शन। सो द कैटालिटिक साइट, after the formation of ES complex, that is enzyme substrate complex, the catalytic site of active site starts catalysis and converts substrate into products. Clear, dear students? So here is the substrate. So this is the substrate. तो जैसे ही सबस्ट्रेट आकर यहां पर अटैच होगा, कहां पर अटैच हो रहा है यहां पर देख सकते हैं, बाइंडिंग साइट के ऊपर। देन द कैटालिटिक साइट स्टार्ट्स द कैटालाइसिस, एंड आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स, what happens? This is our enzyme, and the substrate is converted into products. So here we go. These are the products, and this is again the enzyme ready to be reused or recycled again. Clear? So that was a basic concept. So याद रखना students that active site it has two small regions or sites, the binding site
and the catalytic site. Dear students, ये शॉर्ट क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एक्टिव साइट और डिफाइन एक्टिव साइट और राइट डाउन इट्स टाइप्स, तो आपने पहले एक्टिव साइट को इस तरह से डिफाइन करना है, अ स्मॉल चार्ज बेयरिंग region or site on the enzyme at which the substrate binds and catalysis takes place is called an active site, and it is further divided into two main regions. The binding site, it is the region of the active site which recognizes the substrate and allows the binding or attachment of the substrate, making the enzyme substrate complex, while the catalytic site, after the formation of enzyme substrate complex, the catalytic site of the active site, it starts the catalysis of the reaction and converts the substrate into, that was our substrate, it is converted now into the products. Clear? तो ये आपने उसके साथ लाजमी मेंशन करना है along with this diagram. तो डायग्राम में जब आपसे एक्टिव साइट की पूछा जाएगा तो आपने इसी तरह से एक्टिव साइट को मेंशन करना है और उसके बाद फिर इन दोनों को लेबल करना है कि इसमें ये वाले जो पोर्शन है दैट इज द बाइंडिंग साइट एंड दिस वन इज द कैटालिटिक साइट एंड दिस होल रीजन इज द एक्टिव साइट. क्लियर? Now, dear students, almost all enzymes are protein in nature, but some enzymes, they require some non-protein part to work efficiently or to work properly. तकरीबन ज़्यादातर जो enzymes हैं, dear students, वो protein in nature होते हैं. जैसा कि हमने बात की, they are the most important group of substances that are called proteins. लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको सही तरह से कैटालाइसिस करवाने के लिए, सही तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए, उसको मजीद आगे बढ़ाने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं दैट इज कोफैक्टर. क्लियर? सो हियर आई एम गोइंग टू डिफाइन अनदर टर्म रिलेटेड टू द एंजाइम्स, दैट इज cofactor. So what is cofactor? The non-protein part, dear students, पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा. The non-protein part required by some enzymes for proper functioning or efficacy is called a cofactor. So dear students, let's have a look on this cofactor. So the non-protein part, यहाँ पर non-protein part की क्या बात है, मतलब यहाँ पर इससे क्या मुराद है? Non-protein का मतलब है कि प्रोटीन के अलावा वो कुछ भी हो सकता है. वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो विटामिन हो सकता है, वो कोई मेटल हो सकता है, वो कोई इनऑर्गेनिक आयन हो सकता है, एनीथिंग अदर देन प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रोटीन. जैसे कि हम कहते हैं मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, तो मेडिकल वो हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर, और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हम किन्हें कहते हैं जो बायोलॉजी के अलावा बाकी किसी भी तरह का सब्जेक्ट, वो इंजीनियरिंग भी हो सकता है, वो आईसीएस भी हो सकता है, वो आईकॉम भी हो सकता है, वॉट एवर द सब्जेक्ट, लेकिन उसमें वो मेडिकल से रिलेटेड ना हो, तो नॉन मेडिकल के लिए हम उसको एक जनरली सेपरेट कर देते हैं. इसी तरह से नॉन प्रोटीन का मतलब, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन है मोस्ट ऑफ देम, लेकिन कुछ एंजाइम्स को सही तरह से काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है. उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर. इसके बगैर एंजाइम अपना सही तरह से काम नहीं परफॉर्म कर पाएगा, उस तरह से एफिकेटली या एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा जब तक इसका वो नॉन प्रोटीन पार्ट या जिसको हम कह रहे हैं कोफैक्टर उसके साथ अटैच ना हो. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर को का क्या मतलब है? को, आपने को का वर्ड इससे पहले भी सुना होगा, लाइक को एजुकेशन. ठीक है, को का मतलब हमेशा होता है दो अपोजिट चीजें लेकिन एट अ टाइम मौजूद हों. लाइक को एजुकेशन मीन्स
बॉयज एंड गर्ल्स द अपोजिट जेंडर स्टडिंग एट द सेम टाइम। इसी तरह से कोफैक्टर का मतलब है एक प्रोटीन मतलब कि एंजाइम और नॉन प्रोटीन जो कि उसका ऑपोजिट है वो बैक वक्त एक ही टाइम के अंदर काम कर रहे होते हैं ताकि वो बायोकेमिकल रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवा सकें और फिर जो सबस्ट्रेट्स हैं उनको आगे उनसे प्रोडक्ट्स को बनवा सकें। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ कोफैक्टर। So the non-protein part that is required by some enzymes for the proper functioning or efficacy is called as a cofactor. तो dear students ये भी चीज याद रखनी है, सारे enzymes को ऐसा नहीं चाहिए। ज्यादातर enzymes they are solely made of proteins। जो solely made of proteins हैं मतलब बने ही प्रोटीन से हुए हैं उनको कोफैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ उन एंजाइम्स के लिए ये टर्म है जिनको सही तरह से काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है, उनके लिए ये टर्म है कोफैक्टर। अदरवाइज जो नॉर्मल बाकी जो सोलरली प्रोटीन से बने हुए हैं, जो टोटल अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कोफैक्टर का। सो डियर स्टूडेंट्स अब बात करेंगे इसके फंक्शंस के हवाले से कि इस कोफैक्टर का फंक्शन क्या होता है। So dear students, the cofactor acts as a bridge। ब्रिज समझते हैं मतलब पुल, और जो पुल है वो दो किनारों के दरमियान बनाया जाता है, दो चीजें जिनको आपस में जोड़ना हो। तो यहां पर वो कौन सी दो चीजें? नंबर 1 इज सबस्ट्रेट एंड नंबर 2 इज द एंजाइम। सो द कोफैक्टर एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन the substrate and enzyme। So that is the main function। So dear students next lecture में मजीद इसके हवाले से डिटेल देखेंगे। So dear students hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से डिस्कस करेंगे कुछ मजीद टर्म्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।